the ADHD, Down syndrome, intellectual disability. So, in today's topic, we are going to discuss the reinforcement. First of all, what is the reinforcement? Reinforcement is something that help to increase the responses, your response rate of the student. Reinforcement, if we say reinforcement and preferred item is every preferred item is not a reinforcement. First of all, uh, the thing that motivates a students to make a response and that reinforcement की वजह से जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है बिहेवियर्स की या रिस्पॉन्सेज की वो इंक्रीज हो जाती है सो दैट इज बेसिकली reinforcement जिससे अगर कोई पर्सन मोटिवेट होता है जैसे मैं अगर जुनैरा आप मुझे बताएं कि आपको अगर मैं कहूँ कि 50 पेजेस अगर आपने पढ़ने हैं सो एक बुक के इन वन डे सो उसके एक्सचेंज में कोई ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती हो और जिसके लिए आप 50 पेजेस पढ़ सकें बुक के इज देयर एनीथिंग यस सर, अगर कोई अच्छी चीज़ का फॉर एग्जांपल कोई अच्छी चीज़ मुझे रिवॉर्ड में मिल रही हो तो मैं लाजमी कर दूंगी, जो मेरी पसंद की हो। तो अगर मुझे मुझे रिवॉर्ड में वो मिल रही हो तो मैं 100% करूंगी। ठीक है सो व्हाट इज दैट थिंग आपको क्या क्या चीजें पसंद है अगर खाने में बात की जाए तो अगर कोई मुझे एक प्लेट बिरयानी की भी ऑफर कर दे तो मैं कर लूंगी। ठीक है वेरी गुड सो दैट प्लेट ऑफ बिरयानी इज अ रीइंफोर्समेंट फॉर जुनैरा माइट भी हो सकता है कि जुनैरा को बहुत सारी चीजें पसंद हो ठीक है सो बट everything is not reinforcing not motivating Zunaira to read the 50 pages in one day. So might be the biryani is one of the most preferred, the highest preferred item that is motivating Zunaira to give a response. The same thing goes with the kids. We do therapies. Sometimes I observe that the therapists are using the chips, candies. So chips or candies or chocolate is not the reinforcement. So a reinforcement can be a ball, अगर वो बच्चा बॉल से मोटिवेट हो रहा है सो बॉल इज आल्सो रीइंफोर्समेंट अगर एक पर्सन किसी कार टॉय से मोटिवेट हो रहा है सो दैट कार टॉय इज अ रीइंफोर्समेंट नॉट ओनली द कैंडीज एंड चॉकलेट एंड chips. So if someone likes the candy and he can, or he is enough motivated to perform certain skills, so that is the reinforcement. So this is the basic difference in between the preferred item and a reinforcement. So preferred item does not motivate enough to make the responses, and it does not increases the future probability of occurrence of certain responses. But the reinforcement increases the probability to occur the responses जिससे responses occur हो सकें ओके सो reinforcement हम देते कैसे हैं एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट एज अ बिहेवियर एनालिस्ट वी प्रोवाइड द reinforcement as a consequences like for example if we give instruction sit down the child sit and we say good job you followed my instruction good boy so you did it so that is the social appraisal is a reinforcement the praise I am providing to the student as a consequences जिससे क्या होगा कि in future if I give any other instruction the the child might follows my instruction because he knows that if I follow the instruction I get the praise or I get the reinforcement so to increase the skills we we should understand the ABC of behavior. This is basically a theory of behaviorism
like all other theories of psychology, we the behaviorism says that whatever we do, we actually learn these responses. जितने भी responses आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं या रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, सो ऑल रिस्पॉन्सेज आर लर्न, और वही रिस्पॉन्सेज हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं क्योंकि ये लर्नड रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, और इन रिस्पॉन्सेज के ऊपर रीइंफोर्समेंट दी गई थी या रीइंफोर्समेंट मिली थी, इसी वजह से वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गए। अगर इन रिस्पॉन्सेज के ऊपर हमें रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, सो वी माइट चेंज आवर रिस्पॉन्सेज। ठीक है। सो एंटीसीडेंट क्या है? ए फॉर द एंटीसीडेंट, बी फॉर द बिहेवियर और रिस्पॉन्स, सी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। एवरीथिंग वी लर्न, everything we perform, or any behavior of us is determined. In ABA, nothing is unintended. Every response, every behavior is intended. So that before moving forward, we should understand what is behavior and what is not a behavior. Because when we do our job as a behavior therapist or we deal with the kids, we have to understand the difference. What is behavior and what thing is not a behavior? So, according to the behaviorism, या जिसको हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं, सो इनमें दो थ्योरीज हैं। अभी वो चीजें स्लाइड में नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन अ वेरी डेप्थ मैनर। सो देर आर टू थ्योरीज। एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग या रिस्पोंडेंट लर्निंग। वो बिहेवियर को डिफाइन करती है कि बिहेवियर्स कैसे लर्न होते हैं। और एक थ्योरी है जो डिफाइन करती है ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है। सो ऑपरेंट बिहेवियर एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करती है कि बिहेवियर लर्न कैसे होते हैं। जो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, दैट मोर फोकसेस ऑन द एंटीसीडेंट्स, that the behaviors are learned when we manipulate the antecedents, and the operant conditioning or operant theory says that the behaviors are learned if we manipulate the consequences. We can change the behaviors manipulate by manipulating the consequences. In respondent conditioning, uh, respondent conditioning behaviors are more like reflexes. Reflexes mean जब एक हवा का झोंका हमारी तरफ आता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एकदम से। ठीक है। अगर हम किसी ऐसी चीज को हाथ लगाएं जो गर्म है, हम फौरन से हाथ पीछे हटा लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट था। मैं एक्चुअली एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम पैवलोव का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें क्या किया गया कि डॉग को के बिहेवियर को शेप अप किया गया। ठीक है। डॉग के बिहेवियर को किस तरह से शेप किया गया? अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, जिसमें एक अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस हमेशा अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस से हमेशा अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। और हम क्या करते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस को पेयर करते हैं विद द न्यूट्रल स्टिमुलस। जब हम बार बार प्रेजेंटेशन करते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस की, एक साथ प्रेजेंटेशन होती है,
तो कुछ वैल्यूज शेयर हो जाती हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस की विद द न्यूट्रल स्टिमुलस, मीन्स के यू कैन से द न्यूट्रल स्टिमुलस बोरोज सम वैल्यूज फ्रॉम द अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स द कंडीशनड स्टिमुलस, और कंडीशनड स्टिमुलस से वही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है जो अनकंडीशनड स्टिमुलस से रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है डॉग की। Pavlov is one of the जिन्होंने काफी ज्यादा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में, और जो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है वो पेवलव ने ही प्रेजेंट किया था। तो फूड इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस। फूड और एनीथिंग जिसकी अपनी जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू है, वो बोरोड वैल्यूज नहीं है। जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, पानी है। ठीक है, सो इस तरह की जितनी चीजें हैं जिनकी वैल्यूज बोरोड नहीं है उनको हम अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। अब जैसे ही फूड प्रेजेंट किया जाता है डॉग के सामने, सो द डॉग स्टार्ट सेलिवेटिंग। So the dog salivate because of the food. So the food is the unconditioned stimulus, and the salivation response from the dog is the unconditioned response. Unconditioned stimulus always makes the unconditioned responses. So the bell is the neutral stimulus. If we ring the bell, there is no response from the dog side. So the dog does not make any response on the bell. If we start presenting the bell and the food at the same time, like for example, we ring the bell and we are presenting the food at the same time, the dog starts salivation. So the behavior of the dog of salivation is unconditioned response till now. But if we keep on presenting the bell and the food at the same time, what will happen? The dog will learn whenever the bell rings, there is a food. So there is a conditioning now. So the bell is actually borrowing the values of the food. So there will be a time जिसमें बेल हम सिर्फ रिंग करेंगे, so the dog will start salivation even though we are presenting the food or not, even though we are not presenting the food, still the bell becomes the conditioned stimulus, and this bell causing the conditioned response, which is dog starts salivation when the bell rings because he starts expecting that I will get the food. So this is how we shape the behaviors using the respondent conditioning. And this is how the behaviors are learned. This is also called the classical conditioning strategy. The second, so the classical conditioning strategy always focus on the antecedents. Okay, so antecedents, if we are like in the dog example, in the dog and salivation and bell example, we observed that the bell and the food, the person, the researcher is presenting the bell and the food at the same time. That means we are manipulating the antecedents, that causing a conditioned response. Okay, so this theory is called the AB theory, the antecedent or the stimulus response theory. But if we talk about the antecedent response and consequence theory, we will discuss the operant conditioning strategies in which we more focus on the consequences, not the antecedents. Okay. So in antecedent theory, it causing the
association, positive association, and the negative association. In the consequences, we provide the reinforcement and the punishment as a consequences to change the behaviors. Reinforcement, as I explained, that the reinforcement always depends on the motivation. If the motivation is high, when I, like for example, whenever I look at the cup of tea, my motivation is high to take the sip. Okay, so the reinforcement always depends on the motivation. So that's why there are two concepts, the which we say the motivating operations. This is very important to understand the reinforcement. The motivating operation, there are two types of motivating operations. The first type of motivating operation is the establishing operation, and the second motivating operation is the abolishing operation. Imagine yourself if you are in a desert, एक सहरा है जिसमें आप चलते जा रहे हो, यू आर वेरी थर्स्टी एंड समर सीजन है, प्यास सूरज सर के ऊपर, तपती रेत पाँव में, एंड आपका गला खुश्क हो रहा है, पानी की तलब है, यू आर वॉकिंग, यू आर इन सर्च ऑफ वाटर कि मुझे पानी मिल जाए. Someone came and he demands 10,000 rupees for a small bottle of water. What you will do? Will you buy that small water bottle for 10,000 rupees or not in these specific situation? You will buy it, right? So why? Because you just need the water. You, you are the you are you are deprived from the water. You are thirsty. You need the water. So you will buy in any condition. If you have the 10,000 rupees, you will pay it because you are deprived from the water. You need it. Okay. So that means when we are deprived, we are deficit with something, it increases the value for that stimulus. So this effect is called the abolishing operation. For example, if the child is hungry and you ask the child to say apple, I will give you the apple. So it increases the probability that the student will make the verbal response apple to get the apple because he is hungry. He is deprived from the food. So he will for sure, might be it will increases the chances to say apple or follow the instruction to say apple to get the apple. But if the child is not hungry and you ask him, he just finished his lunch, and you ask him to say apple, I will give you the apple. So he might does not give any response. So the chances to say apple is less when he has already eaten food or meal. So, but in those situations where the child is hungry, so there are chances that the child will make the response. So when we say when someone is deprived and it increases the value of certain stimulus, so that effect is called the establishing operation. When the when there is no deprivation, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि फूड ऑलरेडी खाया हुआ है बच्चे ने, and you ask him to say apple, there will be less motivation or might be zero motivation to get that stimulus. और उसके बदले में अगर रिस्पॉन्स देना पड़े तो हम रिस्पॉन्स शायद वो बच्चा ना दे क्योंकि वो ऑलरेडी खा चुके हैं. सो ये जो अफेक्ट है, ये अबॉलिशिंग ऑपरेशन इसे हम कहते हैं. सो जब हम रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे होते हैं इन आवर सेशंस,
वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इस सिचुएशन में या इन कंडीशंस में ये स्टिमुलस रीइंफोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा। जस्ट एक सेकेंड। Okay, so sorry. So what I was saying, when the child is deprived, you can use that stimulus as a reinforcement, even though that is food or the water or anything. But if you feel that the child is not deprived, like for example, अगर हम बोर हो रहे हैं, we हम entertainment हमें चाहिए, so we will make a response. We will get up from the bed. We'll go outside. We will meet the friends. Might be we will play the cricket. We'll play the football or any video game or something like that. So we will make the responses because we need something to be entertained. Okay, to get the entertainment. So हम responses generate करते हैं. But जब हम बोर नहीं हो रहे, we are okay, fine. So we will not make any response. इसी तरह से जब हम बच्चों के साथ वर्क करते हैं विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सो वी हैव टू इंक्रीज द मोटिवेशन टू गेट द रिस्पॉन्सेज। इफ वी डज नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन टू गेट द रिस्पॉन्सेज, सो उसका कोई फायदा नहीं, आपके रिस्पॉन्स रेट कम होंगे। जैसे नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में जब हम प्ले कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, वी आर प्लेइंग विद द बॉल, वी आर वी आर एंगेजिंग विद द चाइल्ड। सो उसमें हम क्या करते हैं कि एकदम से बॉल, फॉर एग्जांपल बॉल कैच एंड पास की गेम खेल रहे हैं, एकदम से हम बॉल को स्टॉप कर दें थ्रो करना है, एंड वी आस्क द चाइल्ड टू से द बॉल फर्स्ट टू गेट द बॉल। सो माइट भी उसमें मोटिवेशन हाई हो क्योंकि हम उस टाइम पे प्ले कर रहे होते हैं ना। तो जब हम प्ले कर रहे होते हैं, बॉल को लेने के लिए मोटिवेशन हाई होती है। बट इन कंडीशन जिसमें बच्चे का दिल ही नहीं चाह रहा बॉल के साथ खेलने को, तो इफ वी आस्क हिम टू से द बॉल, आई विल थ्रो द बॉल टू यू, सो माई देयर विल बी लेस चांसेस कि बच्चा रिस्पॉन्स देगा वो बॉल। सो इफ यू वांट टू डू द वर्क विद द किड्स, so you have to build the motivation first for the reinforcement. If you feel that this stimulus is not increasing the motivation in the student, you cannot use that stimulus as a reinforcement. To build the reinforcement, to make the reinforcement effective, you can deprive the student with certain stimulus first, and when he is deprived, he wants that item, you can use it as a reinforcement. Okay, like I ask the ball, you play with the ball, the motivation to get the ball is high, you stop and you say the ball, then I will throw it. So once the child say ball, you throw it, you get you start getting the responses. Okay, so the that means the first we were talking about the three term contingency, which was A, B, and C, antecedent behavior and consequences. And after studying the motivating operation, we found out that there are four term contingency. The first is the abolishing effect or the establishing operation. Okay, so if the child is deprived from the food, so this will become the first step. The second would be the instruction from the teacher, and the third will be the response from the child, and the fourth is the reinforcement. So this is the four term contingency. So if we add the
establishing operation or abolishing operation before the SD or the you can say the antecedent. Okay, so the ST is basically the stimulus discrimination, yeah, discriminative stimulus. Discriminative stimulus is हर वो एंटीसीडेंट जिसमें रीइंफोर्समेंट एक्सपेक्टेड हो या जिस इंस्ट्रक्शन के बाद रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट हो so that instruction or antecedent becomes the SD, discriminative stimulus. So if there is another term which we say S delta. S delta is when there is no reinforcement after the response, or you can say the instruction. जैसे for example, if I ask the student, if you raise hand, I will answer to your questions. So to get the answers, so the student um, raise the hand. ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट हैंड रेज करता है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, तो टीचर उसको आंसर करता है. एंड द टीचर सेज अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे, सो आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. So the student did not raise the hand and he just asked the question. So that means that question will not get the response from the teacher. So the reinforcement is the getting response from the teacher or the answer from the teacher. So there is no reinforcement available for the wrong behaviors or unexpected behaviors or responses. So this becomes the S delta. Like for example, if I say don't touch the stuff on the table या मोबाइल को टच नहीं करना, so if he touch there is no reinforcement. If he follows my instruction not to touch the stuff on the table, so I will praise him, I will provide him with the reinforcement. So when there is reinforcement, that antecedent becomes as SD, discriminative stimulus. When there is no reinforcement, the antecedent is S delta. Okay, so this is the basic difference in between the ST and S delta. Just keep these things in mind. If you have any confusion, you can ask me. Okay, so reinforcement जितनी immediate होगी, जितनी जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे reinforcement, उतना ही उसका अफेक्ट ज्यादा आएगा. Like for example, if you provide reinforcement with 0 second delay, so you can get the 100% effect on the responses. If you delayed the reinforcement, so as you delay the reinforcement, उतना ही अफेक्ट कम होता जाता है रिस्पॉन्सेज के ऊपर reinforcement का. So that's why the immediacy of reinforcement is very important point when you do the reinforcement, when you provide the reinforcement. If you want 100% result or effectiveness from the reinforcement, you provide the reinforcement with 0 second delay. Got it? So this is the basically reinforcement concept in ABA. So there are two types of reinforcements. The first is the positive reinforcement, and the second is the negative reinforcement. What is the negative reinforcement? Yes, who is going to answer? Anybody? तो बता सकते हैं reinforcement, positive reinforcement क्या होती है? सर पॉजिटिव रिफोर्समेंट होती है कि जब हम उसको कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं, और नेगेटिव रिफोर्समेंट होती है जब हम उसको कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं. लाइक अगर स्टूडेंट जो है वो क्लास में लेट आया और हम उसको क्लास से बाहर निकाल के खड़ा करते हैं, तो ये नेगेटिव रिफोर्समेंट है उसके बिहेवियर को ठीक करने के लिए. और अगर क्लास में जो स्टूडेंट्स टाइम पे आ रहे हैं हम उनको प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव रिफोर्समेंट है. ठीक है.
वेरी गुड। एक कॉन्सेप्ट आपका एक्चुअली ठीक था। बोथ जो है तो हमारे पास रीइंफोर्समेंट ही होती है। पॉजिटिव में ये होता है कि अगर दोनों में हम इंक्रीज ऑफ बिहेवियर कर रहे होते हैं, लेकिन जब अगर हम किसी बच्चे को कहें कि यू हैव टू कम टू क्लास ऑन टाइम, अदरवाइज आई विल गिव यू कैंडी फॉर दैट, तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव में हमारे पास ये होता है कि हम थोड़ा सा अपने वे को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम बच्चे को कहें कि अगर आप क्लास में टाइम पे ना आए तो आई विल पनिश यू फॉर दैट, तो वो हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आती है। लाइक बोथ बोथ हमारे पास इंक्रीज ऑफ बिहेवियर्स ही होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट का मतलब ही ये है कि वी इंक्रीज द बिहेवियर। ठीक है। रीइंफोर्समेंट अगर नेगेटिव, समटाइम वी कंफ्यूज व्हेन वी लिसन द वर्ड नेगेटिव। नेगेटिव डज नॉट मीन लाइक punishing someone. Negative means removing something. Positive means adding something. When we say positive reinforcement and negative reinforcement, that does not mean like negative reinforcement we hit someone or we take him out like from the class, जैसे टाइम आउट हम करते हैं। सो दैट डज नॉट मीन कि हम पनिश करें बच्चे को, बल्कि नेगेटिव मीन्स रिमूविंग समथिंग दैट लीड्स टू इंक्रीज द बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट इन इट सेल्फ ऑलवेज, रीइंफोर्समेंट का फंक्शन ही है, रीइंफोर्समेंट का फंक्शन है बिहेवियर्स को इंक्रीज करना, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। When we say positive reinforcement, like if I say, Zunera, clap your hands, and Zunera claps the hand. I say, good job, you did it. Here is the tea, you can drink it. So this is a positive reinforcement when I am adding something favorite to after the response. So that is positive reinforcement. Good job, praise is also a positive reinforcement. It is a social reinforcement. It is also called as a positive reinforcement. Adding something that increases the future probability of the responses. Negative reinforcement is removing the unwanted stimulus to increase the response. Negative means removing the unwanted or unfavorable stimulus to increase the behavior. Like, for example, I have the headache. I takes the Panadol. Panadol helps me to relieve the pain. So the pain was removed by the Panadol when I took the Panadol. So it relieves my pain. So remove की गई pain जिससे मेरा behavior increase हो गया to whenever I feel headache I will take the Panadol. So taking the Panadol, the behavior of taking Panadol increases because पेन मेरी रिमूव की गई पेनाडोल लेने के बाद। ठीक है। सो अनवांटेड स्टिमुलस जब हम रिमूव करते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर इंक्रीज होता है, दैट इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे फॉर एग्जांपल escape from the task. I ask my child to do the homework. So he feels difficult to complete the homework. So he starts crying. I just looked at him, he is crying. I just removed all the books from the front of my student, my child. So मैंने सारा उसके डायरीज रिमूव कर दी उसको चुप करवाने के लिए। सो व्हाट आई डिड, जो अनवांटेड स्टिमुलस था, जो होमवर्क था, मैंने वो रिमूव कर दिया, उसको एस्केप दे दी। जो चीज उसको उसके लिए मुश्किल थी उसको हटा दिया
उससे बिहेवियर कौन सा स्ट्रेंथन हुआ? क्राइंग का. सो वेन एवर my child feels anything difficult, he will cry because he knows that if I cry, so जो भी difficult चीजें होती है वो मुझसे remove कर ली जाती है. If I ask my child to clean up the room, वो उसके लिए boring है clean up करना room. So he said, Baba, I am feeling sick. I don't want to do it. I say, okay, child, don't do it. No worries. Your mama will do it. So, what is happening? I am removing the unwanted stimulus from the environment जिससे उसका जो एक्सक्यूजेज वाला बिहेवियर है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, लेम एक्सक्यूजेज, क्योंकि उसको वो टास्क हमेशा एस्केप उन चीजों पे आती है जो हार्ड हो, जो मुश्किल हो करना, या वो बोरिंग हो. उस पे एस्केप बिहेवियर्स आते हैं. अगर हम उनको रिमूव कर दें उन स्टिमुलस को, हम बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही बिहेवियर की. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. गेटिंग माई पॉइंट? Another example is, if my child has itching on the skin, डिस्टर्ब है, इचिंग करी जा रहा है, सो